हाँ जी, कैसे हैं आप? Hello, can you hear me? हाँ हाँ जी, लाउड एंड क्लियर। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हूँ। मेरा उर्दू बहुत अच्छा नहीं है because अच्छा ये मेरा it's not my native language, so I hope your viewers don't mind. But I'm an ex-Shia Muslim, and I've lived. आप ईरान से हो आप? Yeah, मैंने अच्छा, आप इस्लाम ऐसा को जरूर कीजिएगा, आप मेरी इंग्लिश स्ट्रीम में जरूर आइएगा। कल तो इंग्लिश चैनल पे स्ट्रीम नहीं होगी, डिबेट होगी जो कि बेटर ट्रुथ की थी, बेटर ट्रुथ और नादिर अली की थी। अभी बेटर ट्रुथ से मुझे स्टूडियो में नजर आए थे, मैं भूल ही गया यार, मैं कह रहा था अभी लेता हूँ, मैं भूल ही गया हूँ। अच्छा, तो वो जब तुम बात करते हो तो मुझे समझ आता है, लेकिन जब मैं उर्दू बोलता हूँ तो तुम्हारी तरह अच्छा नहीं बोलता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप इंग्लिश चैनल पे जरूर आइएगा, ठीक है? आप इंग्लिश में आके जरूर, इंग्लिश चैनल मेरा, उसका नाम है द रैशनल मसाया, ठीक है? तो उसके ऊपर मैं हर संडे को स्ट्रीम करता हूँ, मगर इस संडे को स्ट्रीम नहीं होगी क्योंकि नादिर अहमद और बेटर ट्रुथ की डिबेट है वहां पे कि इज कुरान साइंटिफिक और नॉट। तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं आगे, सही है? तो आप आइएगा। आप अच्छा, तो आप अगर आप बताना मुनासिब समझें कि आप अभी ईरान में हो या यू आर समवेयर एल्स? नहीं, अब स्विट्जरलैंड में हूँ। मेरा घर कैलिफोर्निया में है। मेरे सारे घर वाले सब जो है उधर जिंदगी करते हैं। लेकिन आई एम ए क्लाउड इंजीनियर, सो मैं रिमोट काम करता हूँ और मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवल करूँ, और सो आई फाउंड दैट आई लाइक स्विट्जरलैंड, सो मैंने इधर ठेका लगा दिया। अच्छा, तो अभी ईरान में जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये अगर अल्लाह सच है तो अल्लाह करे कि ये आयतोल्लाह लोग जो है, I call them Ayatollahs because they're full of shit. अल्लाह करे ये सब बाढ़ में जाए और हमारे ब्यूटीफुल ईरान जो है इस्लाम से बाहर निकले और हमारे लोग आज़ाद हो जाए इंशाअल्लाह। शैतान ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें गुस्सा हो जाए। मगर आप मुझे ये बताएं जरा कि अभी आयतुल्लाह के लोग कितने, ये मौलवियों के कितने खिलाफ हैं? क्योंकि वीडियोज आ रही हैं जिनके अंदर इनके ऊपर से सर से टोपियां गिर रही हैं, लोग उछाल रहे हैं इनकी। तो आपको लगता है कि ये रजीम गिर जाएगी? इंशाल्लाह गिर तो जाएगी, क्योंकि अब 2022 में लोग स्मार्ट हो रहे हैं. People are getting smarter. People are starting to question everything. They don't just believe everything just because एक उल्लू के पट्टे मौलवी ने बोला. People are questioning everything, and these मौलवी लोग जो है ये इनके पास सवाल नहीं है और जवाब नहीं है लोगों के सवालों के लिए. तो फिर ईरान में जो है बहुत सारे शिया लोग हैं, लेकिन when they have done surveys and everything, it turns out that less than 50% of those Shia log actually believe in Shiaism or Islam. 50-60% of the people don't even believe it. But the only reason why people don't come out in public is because apostasy is, we can get killed for apostasy in those countries. So. But there is hope there. I think that maybe in the next few years we would see that something is going to change. ये बदल जाएगा सब कुछ अगले 4 सालों में. मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि एक बार जब ऑथोरिटेरियनिज्म रेजिम आता है ना तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर आज के टाइम में जब इतने इनके पास पावर है, बहुत मुश्किल होता है. मैं जानता हूँ इतिहास ईरान में रैशनलिस्ट लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 50-50 का भी रेशियो होगा ना, बहुत मुश्किल होता है चेंज करना. मगर आई थिंक कि 50 से ज्यादा का रेशियो है, और जिस तरह से अब इनको मार पड़ रही है ना, आई थिंक कि इस तरह से सस्टेन नहीं कर सकता ये अपनी गवर्नमेंट को. मुझे लगता है कि कुछ साल चाहिए, मगर बदलेगा जरूर, मुझे ऐसे लग रहा है. और अब आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं अननोन टेस्ट के. व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम लग सकता है? I think we can expect hopefully a change of regime maybe in the next, I'd say on the long side, I'd say maybe in the next 20 years, because people are done putting up with these outdated Ayatollahs. So let's hope कि ये बदले और हम देखें कि ईरान में एक
लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और ईरान का इतना पोटेंशियल है कि आई थिंक इन नो टाइम इन नेक्स्ट 10 उसके बाद कुछ 10-20 इयर्स में ईरान वुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, अ कल्चरल पावर. तो और मुझे लगता है कि ईरान वुड बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन एशिया, आई थिंक. मेरा एक सवाल था, जो मुसलमान लोग इसको देख रहे हैं, तो you know, they believe from an Islamic history perspective, we understand that there was the Umayyad dynasty, then there was the Abbasid dynasty, and a contemporary of theirs was the Fatimid dynasty. And all three of these dynasties, and there were many other ones, and they were all enemies of each other, right? ये मुसलमान लोग मानते हैं कि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, लेकिन the Abbasid dynasty also claimed that they follow the Quran and Sunnah. The Umayyad dynasty also claimed to follow the Quran and Sunnah, and the Fatimids the same thing. But yet, all three of these dynasties were enemies and fighting each other. And today, what Muslim people follow is the Abbasid doctrine that basically ousted the Umayyads and the Fatimids. So, in Musalman log ka mera ek sawal hai ke how do you know that the doctrine that you follow today that has reached you from the Abbasid dynasty is the truth and not the one that the Fatimids or the Umayyads used to believe? How do you know that what you believe today is the truth when it came from somebody that was fighting those two other dynasties at the time? इनको नहीं पता इस बात का, और आम मुसलमान को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता. उमैयद कैसा इस्लाम मानते थे ये हमें नहीं पता. इवन कि आज हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि मुआविया वाज मोस्ट प्रोबेबली अ क्रिश्चियन. मुआविया वाज मोस्ट प्रोबेबली अ क्रिश्चियन. मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखा जो एक शिया के साथ बात कर रहे थे तुम. वो बोल रहा था कि तुम शिया की हिस्ट्री भी पढ़ो, तुम सारी बातें सुन्नी हिस्ट्री से करते हो. उसको मैं बताना चाहता हूँ कि शिया की कोई हिस्ट्री भी नहीं है. हमारी एक किताब है, like our oldest book is called किताब काफी. Kitab al-Kafi. It's al-Kafi is the oldest Shia book that we have, and it's much older than al-Bukhari, and it's like I think like 200-300 years after Bukhari. So if Bukhari is full of nonsense, what do you expect out of al-Kafi that came much later? And when it comes to Muhammad's history, ye Shia log bhi they read Sirah Nabawi from Ibn Hisham. They don't have their own Sirah Nabawi. The one that they follow is from Ibn Hisham. So if you consider the Sunnis and Sunni historians as apostates, tum log kyun Sunni history padhte ho? Agar Sunni history ko side mein rakh do to tumhari koi pehchan hi nahi hai. You understand? Or ye jo tumhare 12 imams jo hai, jo infallible hai, jo Allah ne sab kuch inke liye banaya, to इनके पास इतना पावर जो था, हुसैन को करबला से फरिश्तों ने क्यों सेव नहीं किया? और ये 12 इमाम्स जो है, इनके पास जो इतना इल्म है, इन्होंने क्यों किताबें नहीं लिखी लोगों के लिए? क्यों हमारे पास टुडे अल-काफी है लेकिन इमाम अली से कोई किताब नहीं है? यही तो बात है. और मेन प्रॉब्लम तो हमारे पास जो एक है वो क्या है? कुरान शुरू में फॉर द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ इस्लाम सिर्फ कुरान था, और मुसलमान पत्थरों से सर मारते थे, उनको समझ नहीं आती थी कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है. और फिर जब आले मरवान का दौर शुरू होता है, द मरवानीज व्हेन दे आर अप, और वलीद, और उसके बाद की बात है कि ये लोग पहली कमेंट्रीज ऑन कुरान सामने आनी शुरू होती है. ठीक है. और वो कमेंट्रीज आज हमारे पास नहीं है. हमें ये पता नहीं है कि कोई तफसीर या कमेंट्री जो कि उमैयद्स के टाइम में लिखी गई थी वो कुरान को कैसे इंटरप्रेट करती थी. हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है. और एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई शिया लोग इस वीडियो को देखे, तो ये शिया लोग जो है every year during Muharram when they go to masjid and they do matam and all this other stuff, the first person that ever institutionalized the concept of matam and giving doing like the 10 nights of Muharram where they give
lectures and everything. The first person who institutionalized this was, I believe, Harun al-Rashid from the Abbasid dynasty. He was the one that popularized all these, and the wearing of black clothes and self-flagellation and everything. All of it comes from the Bani Abbas dynasty, and these Shia log that claim to be the true followers of Islam, they are blindly following the Abbasid dynasty as well. Yeah, exactly यही बात है. सुल्तान सलादीन पूछ रही हैं, गालिब कमाल, ask him about Ali please. Why is he considered a scholar in Shia Islam? Because the Shias believe that Ali basically got his like Muhammad put his hand on Ali's chest and basically like transferred all the knowledge that he had into the chest of Ali, and then Ali did the same thing with his sons Hassan and Hussein, and basically all the subsequent imams just transferred their knowledge in this manner. But the thing is, when you try to find these people from a historical standpoint, there is no Ali in history, there is no Hassan and Hussein in history. It's all these people exist only within the realm of Islam. You cannot find them outside of the Islamic world. You understand? Yeah, and so, definitely हमारे पास मुआविया का more than enough evidence है. हमारे पास अब्दुल मलिक का evidence है, मरवान का evidence है, मरवान बिन हकम का evidence है, फिर अब्दुल मलिक का, अब्दुल अजीज का, हमारे पास इनके evidence, we have their evidence, but none for Ali, nothing for Hassan, nothing for Hussein. कुछ है ही नहीं. And there's another thing that I want to mention, that ये Quran जो है, today's Quran, that people falsely believe it to be like, there are, in the Arabic and Farsi language, there are many words that are similar, the pronunciation is similar, however the meaning is different. So for example, the word Jannah, you know, in ये शियालों का मानना है कि सऊदी अरेबिया में एक कब्रिस्तान है जिधर Jannatul Baqi. Yeah, 3 or 4 of their imams are buried there, so they call it Jannatul Baqi, where in Farsi they think that it's Jannah because it's like paradise of Baqi, because their imams are buried there. However, it's only called Jannah because Jannatul Baqi because the word Jannah in the actual Arabic language means graveyard, you know, graveyard of Baqi. The Iranian people ruled Islam for like 940 years. In those 940 years, they basically incorporated Farsi renditions of the meanings of words within the Quran. And basically, when you read the Quran today, it's like you're reading a Farsi book rather than an Arabic book. Like the Arabic of the Quran breaks all the laws of Arabic, standard Arabic linguistics and grammar. You know, so when you read... मैंने एक स्ट्रीम की थी अभी पीछे, मैंने जिसके अंदर ये बताया था कि द ओरिजिन स्टोरी ऑफ मिराज, मैंने वहां से अर्दा विराफ नमक की बात की थी, वहां से द ज़ोरास्ट्रियन इन्फ्लुएंस. अभी मैंने एक और भी स्ट्रीम करनी है ज़ोरास्ट्रियन इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम के ऊपर, मैंने दूसरी भी अभी करनी है. एक मैंने की है अभी, एक मैंने और करनी है. मे बी देयर आर गोइंग टू बी आई थिंक 3 or 4 ऑन दिस टॉपिक कि ज़ोरास्ट्रियन इन्फ्लुएंस क्या है. मैंने कई बार सुन्नी और शिया लोग के मस्जिद पे गया हूँ और उनके साथ डिबेट किया हूँ. वो लोग हमेशा बोलते थे कि मैं जो डिबेट करता हूँ अरब लोग के साथ है, और वो बोलते हैं कि तुम पर्शियन हो, तुम्हें अरबी में कोई चीज नहीं आती, ये सारी बकवास. और मैंने बोला कि मैं फारसी हूँ, लेकिन तुम्हारी बुखारी, मुस्लिम, निसाई, तिरमिज़ी, तबरी, अबू हनीफा, ये सब के सब फारसी लोग थे. ये क्या मतलब कि मैं अरब नहीं हूँ, मुझे इस्लाम पता नहीं है. एग्जैक्टली. बुखारी जो था वो भी फारसी था, ये सारे फारसी थे. और आई थिंक द पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है इस्लाम के ऊपर वो इतना स्ट्रांग है कि आई थिंक किसी का और का अगर इन्फ्लुएंस है ना तो पर्शियंस का ही है, क्योंकि शुरू की ये बुखारी तो ये बेवकूफ खुद, you know, these were all Zoroastrian people, like Bukhari, Nasai, all these people, they were basically Abbasid government agents. Uska naam, I forget his name, but there was a guy from the Abbasid dynasty whose mother was it was a well-known fact that her mother was a Zoroastrian, and I think his uncle was also a Zoroastrian, and all these people were working in the government, all these Zoroastrian people in the government. So
Islam is basically Zoroastrianism in disguise. हाँ, मगर मैं ये देख रहा हूँ ना, इसके ऊपर सबका इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर ज़ोरास्ट्रियन इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर जूइश क्रिश्चियनिटीज का इन्फ्लुएंस है, मगर ज़ोरास्ट्रियन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली सबसे ज्यादा है, आई थिंक। गालिब इसमें एक और चीज ऐड करेंगे अपन कि जो ज़ोरास्ट्रियन का जो इन्फ्लुएंस है हिंदुइज्म पे भी बहुत रहा है, क्योंकि ये एंशिएंट रिलीजन रहा है और हिंदुइज्म भी जब बाद में ये जो डेवलप होना शुरू हुआ, और क्योंकि ये जो माइग्रेशन थ्योरी जो कहा जाता है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, उसमें भी कहा जाता है कि जो ईरान से है वहां से लोग आए थे और इमिग्रेंट करके। तो आप जिस तरह से देखेंगे ज़ोरास्ट्रियन स्टोरीज है तो हिंदुइज्म में भी वो जो इन्फ्लुएंस है वो दिखता है। उनकी जो सोसाइटी है, जो कास्ट का जो मेन ओरिजिन ये माना जाता है कि जिस तरह का ईरान की जो सोसाइटी में जिस तरह का डिवीजन था एंशिएंट टाइम पे, वो जो डिवीजन जो है बाद में रिफ्लेक्ट हुआ इंडिया का जो कास्ट सिस्टम बाद में जो डेवलप हुआ। तो इस ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है बहुत जगह, बहुत रिलीजन पे। हाँ, क्योंकि दो मेजर चीजें जो है वो फायर करती है इंडिया हिंदुइज्म में, एक शादी और दूसरी डेथ, दोनों फायर से करते हैं आई थिंक के। और अग्नि की आपको पता है, जो पहला हम आपका जो है वो क्या उसे कहते हैं वेद, उसमें अग्नि की बहुत ज्यादा बात हुई है, ऋग्वेद जो पूरा अग्नि के ऊपर बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, क्योंकि वेद का जो शुरुआती था उसमें ये जो हिंदुइज्म का राम कृष्णा ये सब कुछ है ही नहीं, उसमें अग्नि है, उसके अलावा वायु है, ये है, एयर है, ठीक है। तो ये सारे जो नेचुरल जो गॉड्स है वही है रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है जो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन है वहां से ये जो है रेप्लिकेट करता है। चलें, ठीक है। अब्बास द मैग्निफिसेंट की बात कर रहे थे आप, अननोन। हेलो, या आई एम हियर। अब्बास द मैग्निफिसेंट की बात कर रहे थे आप, तो चलें अननोन, आपने कोई और बात करनी है तो कीजिए, वरना फिर हम आगे चलते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं। नहीं, शुक्रिया। The next time I'll join you in the English lecture. I really enjoy your shows. Thank you. Thank you. See you there. Okay, thank you. Bye. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।